talking about your so-called basic programs. So we were on 2B, we completed 2B. Now I'm going to practical number 3. So practical number 3 में एक ही program आता है, but the program says to draw basic shapes in the center of the screen. Okay, we have to draw this in the center of the screen. Okay, so to draw center of the screen में ये हमको draw करना है. ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जस्ट उन्होंने बोला है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सो आप ये कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो. Not really required that you have to draw this in center of the screen, क्योंकि center of the screen में yes ये सारे parts अगर draw करना एक जगह पे किया है मैंने, but that program, so this is, you have to draw a circle, you have to draw a rectangle, a square, a concentric circles, ellipse and line. So this is something that is there, which all this is annex practical. Okay, we have to implement this. इसमें से majority of the parts we have implemented. We have implemented like circle, rectangles, ellipse and line. These are certain parts that have already been implemented. So बाकी के सारे parts हमको implement करना जो है वो pending है. So let's do this part. Okay. As per our program, if you see, हमको जो पार्ट हमने नहीं किया है, रेक्टेंगल किया है, सर्कल किया है, इक्लिप्स किया है, लाइन किया है, दिस स्क्वायर वी हैवंट डन. एंड स्क्वायर के लिए वो जो फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज सेट टू बी द बार. ओके, द बार फंक्शन. ये जो पार्ट है मेनली, दिस इज लाइक यू नो, आपको सेम काइंड ऑफ जो फील है रेक्टेंगल के लिए जो है, वो सेम फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द रेक्टेंगल फंक्शन ऑल्सो राइट हियर, but we are just going to use this particular part, that is nothing but ये हमारा जो part है, will be using that, we'll be using the bar function in the scene. So bar function का natural advantage ये है कि ये filled out आता है. Okay, so bar can replace the rectangle or rectangle can replace the bar. आप जो कोऑर्डिनेट्स दोगे वो है, आप रेक्टेंगल फंक्शन भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो. स्क्वायर के लिए एक ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन नहीं आता है. ओके, स्क्वायर के लिए देयर इज नो स्पेशल फंक्शन. यू यूज द एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल फंक्शन और देयर इज एडिशनल फंक्शन कॉल्ड एज बार. बार का सिंपल मीनिंग ये है, कलर जो होता है वो फिल्ड आउट होता है. कलर विच इज देयर is nothing but filled out. So that is the part that you all shall have right here. So let's go and see the bar function. It's the same thing. Quickly let's do it, and then we'll move to our another part, that is concentric circles. Okay, so we'll move to concentric circles later. Okay. Okay, so we are on the bar function. So directly I'll just write something. Coordinates हम बाद में arrange कर सकते हैं. So 100 comma 100, and then I go after something called as 200 comma 200. So ये 100 का मैंने गैप रखा है. द रीजन इज वो स्क्वायर के जैसे लगना चाहिए. द रीजन इज स्क्वायर के जैसे रखना चाहिए, तो हर साइड से इवन होना जरूरी है. एंड दैट इज द ओनली पार्ट दैट makes me keep it equal. So here is your bar. As I said, this comes in with the part that
दो तीन जो टल पार्ट होता है वो फिल्ड आउट होता है यहाँ पे. द पार्ट विच इज देयर इज कंप्लीटली फिल्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर केस. So that is the bar. Now there is one more bar function that we have that I will just write out over here. uh, इसमें this is said to be the 3D bar. This is said to be the 3D bar. Okay. So ये जो 3D बार है, let's keep the values to be the same. फंक्शन में चेंज देखो कहां पर आ रहा है. दिस इज द नॉर्मल बार. आगे हम लिखेंगे यहाँ पे 3D. ओके, विल राइट इट टू बी 3D, बट कोऑर्डिनेट्स हम सेम रखते हैं. बट इसमें और एक पैरामीटर ऐड हो जाएगा. ओके, दिस इज और एक पैरामीटर ऐड होने वाला है. इस पैरामीटर को हम फ्लैग कहते हैं. इस पैरामीटर को हम फ्लैग कहते हैं. फ्लैग की दो वैल्यूज हो सकती है. इफ यू डोंट जस्ट सेट इट, मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसे ब्लैंक रखते हो, जस्ट 200 पे स्टॉप कर देते हो, दैट इज द वन पार्ट. ओके, दूसरा आप यहाँ पे एक फ्लैग दे सकते हो. इफ फ्लैग की वैल्यू हम डालते हैं 1. ओके, और फ्लैग की वैल्यू हम डालते हैं 1, इसका मतलब ये है कि 3D में उसको दिखाना है. सो लेट्स सी इसका आउटपुट आता है क्या सबसे पहली चीज, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच द टर्बो सी इज कैपेबल ऑफ, बट दिस इज अ फंक्शन अवेलेबल. ये सी के लिए ही दिया गया है, सो होपफुली दिस शुड वर्क, समथिंग इट शुड वर्क. सो लेट्स ट्राई इफ दिस इज working or not. So if flag is set to be 1, if flag is set to be 1, it means that the 3D should be visible. The 3D should be visible. So 3D matlab set hona chahiye, wo, that is the part. So too few parameters in call to bar 3D. Why so? Okay, दूसरा एक पार्ट है. Okay, डेप्थ भी देना पड़ता है इसके लिए. So I've just forgotten one parameter. सो यहाँ पर सबसे पहले कॉमा देने के बाद डेप्थ आता है. ओके, डेप्थ के बाद हमको फ्लैग. सो डेप्थ देंगे हम. लेट्स अज्यूम द डेप्थ शैल बी समवेयर अराउंड 30. ओके, एंड फ्लैग. फ्लैग का मतलब ये है कि 3D होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. अगर 1 है तो होना चाहिए. सो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू गिव 1. यू कैन कीप इट टू बी ब्लैंक, और ब्लैंक नहीं रख सकते आप. वहां पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी 0 अगर आप नहीं सेट करना चाहते हो तो. सो इफ यू डोंट वांट टू सेट इट, द वैल्यू हैज टू बी समथिंग कॉल्ड एज 0. So that is the part that we have in this particular case of your bar 3D. So going after it, 0 errors, and then we can run this particular part. So here it goes. This is how your particular 3D bar shall look, and that is basically it's drawing the cube. It's basically drawing the cube, and this is how it shall look. Okay. So this is the function of bar 3D. Now let's go to something called as concentric circles. So concentric circles, we all know what are concentric circles. We have seen them in maths. Okay, we have seen them in maths. ये कुछ होते हैं हमारे concentric circles. This is the part of concentric circles. So when we talk about concentric circles, they are equal. If you see, equal as in equal सेंटर से पहला सर्कल निकाला जाता है, बाद में दूसरा सर्कल निकाला जाता है, तीसरा सर्कल निकाला जाता है. The growth is equal. The growth is equal. If I say the first circle was of 5, the radius was 5, then the next circle's radius shall be 10. Third circle's radius shall be 15. Fourth circle's radius shall be 20, and so on. So equally growth होता है. या तो आप कैलकुलेट करते हैं, इतने सर्कल्स इक्वली ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसके लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम फॉर लूप जो है दैट ऑल्सो वी कैन यूज इट. सो लेट्स सी हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर लूप.
for our so-called concentric circles. So उसके लिए it's quite simple using the for loop. I will just write it explanation आपको, I'll give it to you all. Okay. First, the very first thing that we are going to do right here is give the initial values. So I'll just write the formula for loop. For loop I'll write over here to draw concentric circles. So हमको पता है कि हमको circle निकालना है. Okay, we have to basically remove the circle. So circle निकालना है, इसका मतलब हमारे पास एक center point होना चाहिए. Okay, we should have something called as a center point. And after we have the center point, center point की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, x and y की वैल्यू ले लो. अब इस x and y से हमको सेंटर सर्कल निकालना है. सो ये होगा पहला सर्कल, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा. ओके, उसके बाद दूसरा सर्कल होगा, तीसरा सर्कल होगा, एंड सो ऑन. तीसरा सर्कल होगा एंड सो ऑन. सो this is something that we have to do. Now, as I told you all, ये हम कैसे करेंगे, we're going to do this with for loop. So हम एक x and y की वैल्यू लेंगे, कुछ भी ले लो आप. Okay, you can take a x and y value. Okay, the very first thing we'll be setting something called as int x comma int y. This value we'll consider some value from this and we'll keep it. In the next step we'll start with for loop. For loop सबसे पहले हम रेडियस देंगे. Let's take radius to be 25. Okay, after the radius is 25, okay, once the radius is 25, अभी हम एक कंडीशन देंगे, that is ये रेडियस के ऊपर बेस्ड होगी. आपको पता है जो हम i लेते हैं उस i का हम कंपैरिजन करते हैं. फॉर i is equal to so and so, i is less than greater than. So हमने radius equal to 25 लिया है, so radius लेस देन ग्रेटर देन कुछ होना चाहिए. सो मैंने यहाँ पे कुछ डाला है रेडियस लेस देन इक्वल टू 125. आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, नॉट एन इशू. एंड okay, then the next step is incrementing the I, that is nothing but incrementing the radius. In this case we have to increment the radius because our variable is radius. भी आप यहाँ पे I भी ले सकते हो as radius. So incrementing the radius. अभी radius को आप increment कैसे करोगे? रेडियस को इस तरीके से इंक्रीमेंट करना है ताकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो फॉर्म हो जाए. So, उसके लिए we are just going to say radius is equal to radius plus we can take something called as might be 125 है, so let's take 20. Okay. And then inside the for loop, if these conditions are matching, you have to draw a circle. से निकालोगे सर्कल अंदर x and y का पॉइंट आएगा एंड बाद में आएगा आपका सो कॉल्ड वैल्यू देते हम रेडियस के लिए. सो वो रेडियस की वैल्यू वहां पर आने वाली है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस एंड दैट्स इट. The circles will be drawn until and unless the condition is met. Until and unless the condition is met, the circles are going to be drawn. So this is the logic that we use. ये हमारा initial radius है. Okay, ये हमारा initial radius है. That will be compared if it is less than 125. Okay, and the circle will be drawn. After that increment होगा, ये increment होगा, radius will become radius plus 25, so 25 plus 20. Is it less than 125? Yes, it is less than 125. So again वही same x and y को as center लिया जाएगा. Okay, as center of the circle लिया जाएगा and the radius will be drawn. So in this case if we see what happens, सबसे पहले हम एक center point लेते हैं
ओके, सेंटर पॉइंट। सो सबसे पहले हम रेडियस इज इक्वल टू 25 लिया, और हमने एक्स एंड वाई कुछ लेके रखा है, लेट्स अज्यूम 100, 100 लिया है। We have taken it to be 100, 100. So after that, radius is less than equal to 125. Radius is 25. So is what 25 is less than equal to 125, and that's the reason we'll draw a circle with the center point. Abhi the radius is something called as 25. Okay, this is done. We'll increment the radius. 25 plus 20 is nothing to be 45. So हमारा नया radius होगा 45. Is 45 less than 125? Yes, it is less than 125. So again we'll get inside the loop. Over here we'll draw the circle. अभी center point हमारा change हो रहा है? नहीं, वो तो 100, 100 ही रह रहा है. So 100, 100, but now the radius is 45. So यहाँ पे कुछ ऐसा circle draw हो जाएगा जिसका रेडियस अभी होगा 45. Now we are saying 45 plus 20. With this statement, we are saying 45 plus 20. 45 plus 20 will be somewhere around 65. So 65 यहाँ पर आएगा. 65 less than equal to 125. Yes, it is less than equal to 125. So again, we get inside the loop. X and Y points remain to be the same 100, 100. So यही point रहेगा, और radius हम एक circle draw करेंगे with radius something called as 65. So ये कुछ ऐसा दिखेगा. Okay, then now 65 plus 20, that is nothing but 85. So यहाँ पे होगा 85. 85 is also less than 125. So yes, 85 is less than 125. So again we'll get inside the loop. Again the x and y point will remain to be 100, 100. So center point same ही रहेगा, just radius जो है वो बढ़ने वाला है. So और एक circle आएगा जिसका part होगा this, and now the radius will be 185. Sorry, 85. So ऐसे हम इसको draw करेंगे. So we were right here and we understood the bar 3D part and so on. Now going to the next part. As I said, we'll try to implement something called as concentric circles using the part of for loops. So as we had specified right there, we declare radius, int radius. The very first radius that we declare was 25. So let's wait it to be 25. If radius less than equal to 125, as we decided, let's take it 150. Okay, radius less than equal to 150, it would be radius equal to radius plus 25. So this is something that we saw, and inside we'll be using int x and y. So int x and y को हम यहाँ पे declare करते हैं int x, y. Okay, और इसकी हमको values देना जरूरी है. So let's assign some values to this. I'm not taking this from the user. X is equal to, let's say, somewhere around 300. Okay. And let's y be equal to something called as 200. Okay, so x and y, and let's draw something called as circle. Circle का जो inbuilt formula है, x and y, it's comma y, and then comma comes your radius. This is something that we have for your circle. So yeah, this is something that we have for our circle, and this is the part that we implemented. So this is it. So here I'm taking 20. The reason to take 20, it's थोड़ा सा फॉर्मुलेशन नहीं तो गलत हो सकता है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आने चाहिए. आप 25 भी ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं.
चलो देखते हैं 25 के साथ कितने सर्कल्स आते हैं और 20 के साथ कितने सर्कल एग्जैक्टली देयर विल बी सर्टेन 3 or 4 सर्कल्स राइट हियर सो थोड़े से ज्यादा आना चाहिए था दैट वाज माय विश दैट्स द रीजन आई वाज टेकिंग मोर बट दैट्स समथिंग दैट वी कैन एडजस्ट so that is completely fine it says 2 warnings okay expression syntax. Just a minute. Let's assign the values right there, because that is the only part that can might be help us. ओके जीरो एरर्स एक चेंज मैंने यहाँ पे ये किया है यहाँ पे 320, 200 लिया था मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं थी सो ये जो है that is basically for the center of the string okay that's the reason I've taken relevant values 300 200 ये जो xy पॉइंट मुझे चाहिए था वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन में चाहिए था सो दिस इज नॉर्मली द हाफ ये 640 आता है एक्स एक्सिस पे so उसका हाफ होता है 320 and the same goes somewhere around for your 460 रहता है y axis के ऊपर so somewhere around 240 shall bring us to the center या 480 रहता है शायद so somewhere around 240 should bring us to the center of y axis so on the y axis so that will give us the center that's the reason previously also I had taken relevant values that was 300 200 but this is better मुझे exact values मिल गई है so that is the better part so this is it now let's go and run हमको concentric circles यहाँ पर मिलने वाले हैं so if you see this is nothing but concentric circles part so yeah this is something that is how it goes on okay now in this concentric circles let's try another one particular function and that function is nothing but यहाँ पर हमको मिलेगा that function is set to be your delay function okay so let's try this particular function and let's see ये हम delay function को use करेंगे delay function is used to suspend execution of a program for a particular time okay delay function is used to suspend execution of a program for a particular time so थोड़ी देर के लिए वो suspend करेगा okay it will stop the execution and then it will continue the execution okay for some time it will stop the execution and it will continue the execution which is there okay and remember they have given 1 second is equal to 1000 milliseconds
So यहाँ पे हमको we have to, here the unsigned int is the number of milliseconds, so we have to give this int value in milliseconds, that like 1 second चाहिए तो 1000 milliseconds हमको देना होगा. So this is something that is required. So let's try to do this delay and see what effect we get in delay. ये नॉर्मली ये एक ऐसा फंक्शन है जो कभी कभी हमारे एनिमेशंस के लिए यूज किया जाता है. ओके, दिस इज नॉर्मली यूज फॉर एनिमेशंस. सो इन फ्यूचर लास्ट प्रैक्टिकल्स हमारे कुछ है, लॉन्ग टाइम टू गो, बहुत वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए. वक्त मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, somewhere in this month we should reach there, but yeah it is supposed to take a bit of a time. So वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है, बट यहाँ पर इसका एक क्या कहते हैं, let's see एक इम्पैक्ट कैसे आता है. सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू योर फॉर लूप आफ्टर योर सर्कल स्टेटमेंट, and let's delay the execution by certain time. And उन्होंने 1000 milliseconds मतलब 1 second दिया था, let's put it 1.5 seconds. okay, so 1 second 1.5 second शायद इससे भी स्लो हो जाए. टर्बो सी है at last, so can't really help it, but let's try to see what is the impact. ओके, एक चीज याद रखना, डिले फंक्शन जब भी यूज करोगे तो ये डॉस डॉट एच जो है वो आना चाहिए. मेरे इस प्रोग्राम में डॉस डॉट एच 100% रहता है, क्योंकि आपको पता है मैंने दो वेज होते हैं टर्बो सी इंस्टॉल करने के. मतलब नॉर्मल वे आजकल यही होता है कि डॉस बॉट्स के अंदर हम टर्बो सी चालू करते हैं, राइट. सो आपका जो कॉलेज का वर्जन है वहां पे डॉस बॉट्स के अंदर चालू करते हो. नॉर्मली घर पे भी सबके यहाँ पे शायद डॉस बॉट्स आपने इम्प्लीमेंट करके रखा हो या मुझे पता नहीं, बट मैंने ये जो वर्जन किसी ने बनाया हुआ लिया है वहां पे डॉस बॉट्स और आपका टर्बो सी इंटीग्रेटेड आता है. और इसके वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, दैट इज इस पर्टिकुलर टर्बो सी के वर्जन के लिए डॉसबॉट्स का ये जो हैश इंक्लूड है ये हमेशा देना पड़ता है. दैट वाज गिवन इन दिस नोट्स बेसिकली, रीडमी जो था उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त उन्होंने दिया था वो, इसलिए ये सारी चीजें, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे अलग है. that is how this particular software has been modified to for use differently. DOSBots यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. So that is it. So compile, no errors, so I just go on run. So you see the output. The output is a little bit different. That is slowly for loop में डाला है मैंने वो. इस वजह से पहला सर्कल आता है, बाद में एग्जीक्यूशन 1.5 सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है, फिर दूसरे सर्कल का एग्जीक्यूशन होता है. दूसरे सर्कल के एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद अगेन द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स. सो कंटिन्यूसली हमको आउटपुट सारे एक ही स्ट्रेच में नहीं दिखाई देता है.